Hi, good evening, everyone, and welcome to today's session on Ola Electric IPO review. Uh, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को विल ट्राई एंड यूज अ मिक्स ऑफ बोथ. इसमें जस्ट डिस्क्लेमर्स. हम कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और काफ़ी सारी डीप डाइव डिस्कशन करेंगे. एंड ऑब्वियसली कुछ थोड़े से पोल क्वेश्चंस भी होंगे जहाँ पे हम आपका आपका व्यू जानने की कोशिश करेंगे. I am happy to share that I'm joined by my colleague Yash, who's the auto analyst and also has done a very extensive, exhaustive work around this is researching about this company, including doing a plant visit about 2 weeks back, and also meeting the leadership team, including MD CEO Bhavesh Agarwal. With that, let me just quickly move on to व्हाट इज इनसाइट. तो हम आईपीओ की डिटेल्स क्या है, इंडस्ट्री, ईवी इंडस्ट्री पे ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे. पेयर्स कौन कौन से हैं, बोथ इन द आइस व्हीकल साइड एंड ईवीज, एंड बोथ ऑन इंडिया एंड ग्लोबली. ओला इलेक्ट्रिक पे ओवरऑल एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे. स्ट्रेंथ्स क्या है, रिस्क क्या है कंपनी की, वो देखेंगे. ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, लास्टली कंक्लूजन. तो दोस्तों, जो आपको जो मेन आपका जो मोटिव रहेगा कि जानने के लिए कि एंड में करना क्या है, वो इट विल बी राइट एंड द एंड. तो विल रिक्वेस्ट यू टू स्टे विद अस right till the end, so that you can get a broader idea of what we are thinking about this story. हम कोशिश करेंगे अगले 30-35 मिनट्स में इसको रैप अप करने की. इट्स अ वेरी डिटेल्ड एग्जॉस्टिव प्रेजेंटेशन, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए. हमने बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से उसको दिखाने की कोशिश की है. कंपनी कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी. एंड जो ऑटो स्पेस के बहुत क्लोजली वॉच करते हैं उनको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा. एंड डेफिनेटली हमने कंपैरिजन भी करने की कोशिश की है कि किस तरीके से पैन आउट हो सकता है. तो क्विकली 2 अगस्त विच इज टुडे, आज आईपीओ खुल गया है. एंड आज ही मैंने उसका देखा था. उसका द सब्सक्रिप्शन इज एम्प्लॉइज इज 5 times ओवर सब्सक्राइब्ड, रिटेल इज 2 or 3 times ओवर सब्सक्राइब्ड, एंड बाकी सारे कैटेगरीज धीरे धीरे होंगे बिकॉज दे टिपिकली टेंड टू गेट ओवर सब्सक्राइब ऑन द लास्ट डे. मोर ऑन द क्यूआईबी साइड. कल का इनका क्यूआईबी बुक बहुत अच्छा था. द एंकर इन्वेस्टर्स जो बुक था, उसमें मार्की इन्वेस्टर्स लाइक एसबीआई, एचडीएफसी, फिडेलिटी, नमूरा, गोल्डमैन सैक्स आए थे. ओवरऑल जो आईपीओ का साइज है वो इज अबाउट 6,145 crore. फ्रेश इशू. इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट पॉजिटिव बातें जरूर हैं जो नोट की जा सकती हैं. 1, आउट ऑफ 6,145 crore, 5,500 crore इज फॉर फ्रेश इशू, जो बताता है कि जो कंपनी का ज्यादा पैसे जो ले रही है वो शेयर होल्डर्स अपना बेच के नहीं जा रहे. इट इज फॉर मतलब ग्रोथ कैपिटल, आप उसे बोल सकते हैं. आगे हम देखेंगे किस एग्जैक्टली ये यूज किया जा रहा है. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, इसका जो वैल्यूएशन लास्ट टाइम हुआ था करीबन अबाउट अ ईयर बैक, उसमें भी हम देखेंगे आगे स्लाइड में, उससे काफी कम वैल्यूएशन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं. रियलिस्टिक वैल्यूएशन बोला जा सकता है. करीबन $4 billion की बात है. 33,000 crore. That is point number 2 की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है. एंड which is about 76 rupees on the higher side. So this is broadly the contours of the IPO. ये है पूरा डिटेल. जो 5,500 crore कंपनी रेज करने की कोशिश करी है, वो कैसे यूज करेगी. कैपिटल एक्सपेंडिचर पे यूज करेगी 1,200 crore रुपए. उनके प्लांट्स चेन्नई में, और उनके जो प्लांट्स हैं इंक्लूडिंग ऑन द गीगा फैक्ट्री, उस पे स्पेंड होगा. डेट कम करने की 800 crore का उनका टारगेट है. आरएनडी पे बहुत बड़ा नंबर है, 1,600 crore. अभी तक टिल डेट उन्होंने 1,000 crore प्लस स्पेंड किया आरएनडी के ऊपर. एंड 100 crore बहुत बड़ा नंबर है आरएनडी पे स्पेंड करना. मे भी इस इंडस्ट्री में जरूरत भी है, तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इस आईपीओ प्रोसीड्स का. आगे के ग्रोथ इनिशिएटिव्स पे स्पेंड करेंगे, एंड उनके जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस पे भी एक बड़ा नंबर है. तो कुल मिला के 5,500 crore का ओवरऑल फंड रेस का वो स्पेस है. ये है उनके टॉप 4 चेहरे. ऑब्वियसली मिस्टर भावेश अग्रवाल, फाउंडर एमडी, फेमस हैं. उनके जो मेन कंपनी है ओला कैब्स, जो ऑलमोस्ट 10 साल से सक्सेसफुली चल रही है. ऑब्वियसली वो भी लॉस मेकिंग है, और ये कंपनी इन्होंने कुछ 5-1 साल पहले स्टार्ट की. अगेन डिटेल्स यश विल शेयर, एंड हाउ आज ये नंबर 1 बन गई है अपने स्पेस में. हरीश अभिचंदानी, सीएफओ,
is at the leadership team. CMO Anshul Khandelwal and CTO Sovanil Chatterjee, ये सारे कुछ बड़े बड़े नाम एटलीस्ट दिख रहे हैं जो जो कंपनी की भागदौड़ संभाल रहे हैं. And they have been with the group for the last 7, 8, 10 years in that range broadly. तो at least in चार लोगों के बीच में there is लीडरशिप बहुत मजबूत मजबूत दिखती है. आगे देखते हैं. सो शेयर होल्डिंग पैटर्न 45% इज विद द प्रमोटर ग्रुप विच इज द अग्रवाल फैमिली. एंड दैट इज वो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे भावेश अग्रवाल इंडस्ट्रियल ट्रस्ट और एएनआई टेक्नोलॉजीज, तीनों को मिला के 45% स्टेक है उनके बीच में. एम्प्लॉइज का करीबन 5-8% है जिसमें ईसॉप सब आ जाता है. एंड जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उसमें जो बड़े नाम हैं, जो सॉफ्ट बैंक आ जाता है इसमें, मैट्रिक्स पार्टनर्स बड़ा नाम है, उनके एम्प्लॉइज वेलफेयर ट्रस्ट भी है, ओईएम्स एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट है, अल्फा वेंचर्स पार्टनर्स, hyundai मोटर्स ने भी इनके अंदर स्टेक लिया हुआ है, और इनमें से कुछ लोग ओएफएस में पार्टिसिपेट भी करें. सो another interesting point, it is not one of those few companies जहाँ पे प्रोमोटर का स्टेक जो है काफी कम है या और कम हो जाएगा. आई थिंक ब्रॉडली 45% है, एंड मे बी पोस्ट आईपीओ इट विल स्टिल बी in excess of 40 to 43%. So, which is again a positive sign, given what other similar companies जो हैं उनका काफी कम हो जाता है आईपीओ के बाद. तो ये एक अच्छी बात है. सेलिंग शेयर होल्डर्स में जो टॉप ऑब्वियसली भावेश अग्रवाल और उनकी जो फैमिली, उन्होंने राइट एट द स्टार्ट उन्होंने अपना सीड कैपिटल, सो कॉल्ड सीड कैपिटल डाल के किया था, तो उनको ऑब्वियसली रिटर्न ज्यादा है. बट जो बाकी के लोग हैं, चाहे मैट्रिक्स पार्टनर्स हो, सॉफ्ट बैंक हो, या और बाकी के लोग हैं, उन्होंने वो भी थोड़ा थोड़ा बेच के दे आर अर्निंग रीजनेबली वेल. बट इंपॉर्टेंट बात, लास्ट के जो 3 नाम अगर आप देखेंगे तो वो लॉस पे बेच रहे हैं. दे आर सेलिंग शेयर होल्डर्स, बट वो लॉस पे बेच रहे हैं. अब ऑब्वियसली उनकी भी अपनी रिक्वायरमेंट होगी, बट डेफिनेटली कंपनी ने ज्यादा ध्यान शायद इस बात का रखा है कि मार्केट में करंट सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, किस वैल्यूएशन पे इसकी डिमांड है, इस वजह से वो उन्होंने इस प्राइस पे लिया है. इवन इफ इट मींस कि किसी को नुकसान हो तो हो, राइट. सो लास्ट के 3 शेयर होल्डर्स को आप देखेंगे तो उनको नुकसान हो रहा है, स्टिल दे आर सेलिंग, एंड कंपनी ने ज्यादा जो अहमियत इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की, दैट इज फॉर टू एंश्योर कि मार्केट पे एक रीजनेबल प्राइस, इसके अराउंड हम सिर्फ इसके अराउंड एक कंक्लूजन ऐसा करने की. Before I jump in, I will request my colleague Naveen to put in the first question around 3 questions हम पोल से जानने की कोशिश करेंगे हमारे ऑडियंस से. ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ के अराउंड आपका व्यू क्या है? एक हम अभी पूछेंगे इन सिमिलर क्वेश्चन राइट एट द एंड, मे बी आपका व्यू तब बदल जाए. तो एक अभी के लिए, व्हाट इज योर व्यू अराउंड दिस आईपीओ? सो इट्स अ पोल क्वेश्चन, सिंपल, एक बटन आपको क्लिक करना है एंड इट विल be on your screen. It's there. Yeah, it's there on your screen, friends. So आप इस पे सिंगल क्लिक में व्हाट इज योर व्यू, आई थिंक 3 ही ऑप्शंस है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कांट से. तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन वन ऑफ दीज ऑप्शंस टू सजेस्ट आपका एज ऑफ नाउ, बिफोर वी स्टार्ट, एंड ऑब्वियसली आपका अपना एक व्यू होगा, आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये आपका व्यू क्या बन रहा है ब्रॉडली इसके अराउंड, एंड देन विल क्विकली मूव ऑन टू दी अदर पार्ट ऑफ दी. Yeah, another 5 seconds, and then we quickly move on to the next screen. Yeah, we can stop now, and I mean, just confirm once it's done, and I can move on. Yeah, it's done. Okay, thank you, thank you, everyone. So, moving on quickly, global two-wheeler market by volumes, China number 1 है, करीबन 6 करोड़ व्हीकल्स एनुअल बेचते हैं. इंडिया इज नंबर 2, अबाउट 1.7 करोड़, एंड उसके बाद सारी कंट्रीज हैं. तो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंडिया इज नंबर 2 बाय वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ टू व्हीलर्स. या बट when it comes to EV penetration, that is this slide, इंडिया का जो स्थान है वो 5% है. सो अब 100 बाइक्स अगर बिकती हैं, 100 टू व्हीलर्स बिकते हैं, लेट्स कॉल इट टू व्हीलर्स,
विच इज अ मिक्स ऑफ स्कूटर्स एंड लार्जली बाइक्स। 100 अगर व्हीकल्स बिकती हैं तो पांच ही व्हीकल्स हैं जो ईवी की हैं। यही नंबर जर्मनी में एज मच एज 90 है, 90%। 100 बिकती हैं तो 90 गाड़ियां ईवी की हैं। 85 ईवीज हैं इन चाइना। फ्रांस में 50%। एंड यू कैन सी, मतलब ये क्लियरली क्लियरली बताता है कि यहाँ पे स्कोप ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट काफी है। एंड वो कितना है, इंडिया का मतलब इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद आप देखेंगे कि ईवी का जो पेनिट्रेशन इतना कम है। कितना बड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है वो ये है। नाउ रेड सीयर एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके अनुमान के हिसाब से जो इंडियन ईवी पेनिट्रेशन है टू व्हीलर्स को लेके, वो 41 से 56% पेनिट्रेशन लेवल पहुंच सकता है बाय FY 28। बहुत ज्यादा दूर नहीं, 4 ही साल है, राइट। तो पिछले 4 सालों में इंडिया ने 0 से ऑलमोस्ट 5% पहुंची है, यहाँ से 5 का एज लो एज 41% हो सकती है, जो बहुत बड़ा नंबर है, राइट। 4 साल में 40% पेनिट्रेशन करना इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक 8x, राइट। अगर मैं बीच का भी एक नंबर लूं तो उसमें मोटा मोटा 8x हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगेन, अगर आप दे विल बी देयर इज अ हीटेड डिस्कशन, इतना बड़ा नहीं होगा, 10 तरह की दिक्कत है तो दैट, बट ठीक है, मतलब 40% नहीं होगा तो 35 होगा, 35 नहीं होगा तो 30 होगा। बट ले देखिए, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, जो जो कंट्रीज हैं, राइट, इटली, स्पेन, फ्रांस, वो 35-40% तो 50% तो पहुंची हैं। अगर हम 90% नहीं भी जाते, 30-35% पहुंचना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, जिसके अराउंड पूरी कहानी कहानी या पूरा जो जो स्टोरी है वो बिल्ट है। अगर ये इतना बड़ा पेनिट्रेशन लेवल का एक्सपेक्टेड नहीं था, तो प्रोबली स्टार्टिंग पॉइंट ही वीक होता है इस पूरी स्टोरी की। एंड शायद बहुत बड़ा डिस्कशन फिर या रीजनेबल जो एक्साइटमेंट है आज के दिन में ओला को लेके, डिस्पाइट बीइंग लॉस मेकिंग, वो शायद इतनी हाई नहीं होती। विद या ओके, मार्केट शेयर कैसा है? सो एम्पियर इज अ लीडिंग नेम इन द टू व्हीलर्स। 6% मार्केट शेयर इन टू व्हीलर्स, ओके, टू व्हीलर्स ईवी ओईएम इन FY 24। एम्पियर का जो स्थान था वो फिफ्थ था, 6% मार्केट शेयर। बजाज वॉज 11%, नंबर 4 एथर वॉज 12%, नंबर 3, नंबर 2 वॉज टीवीएस। इट्स अ बिग सरप्राइज, टीवीएस इज डूइंग रियली रियली वेल, उन्होंने बहुत अच्छा स्थान बना लिया। एंड ओला का जो स्थान था वो नंबर 1 था FY 24 में, विच इज एट 35% मार्केट शेयर। एंड लेटेस्ट नंबर अगर आपको जानना है तो ये है लेटेस्ट नंबर। लेटेस्ट नंबर है, ओला इज स्टिल नंबर 1 एट 41% मार्केट शेयर, तो उन्होंने 6% मार्केट शेयर गेन किया है। टीवीएस ने लूज किया है, 19 से 16 पे आ गए हैं। एथर ने भी लूज किया है, बजाज ने भी लूज किया है, एम्पेयर ने भी लूज किया है। तो नेट नेट ओला का जो मार्केट शेयर गेन है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू ऑल अदर्स, एंड दे मेंटेन देयर नंबर 1 पोजीशन इवन इन द फर्स्ट क्वार्टर। एंड बाय नो मींस इट्स अ स्मॉल अचीवमेंट, एंड उसके बहुत सारे कारण हैं जो माय कोलीग यश will take you through. So with that, let me just hand it over to my colleague Yash, who will take you to the subsequent slides, and I'll come back at the end just to give us some summary of our sense on the broader IPO. Okay, thanks, Jaspreet. So, if we look at the broader Indian two-wheeler market, it has been dominated by the motorcycles. Now, if we see scooters have increased their share in last 10 years from 21% to 34%. If we look at a specific price segment, so up to 1 lakh, specifically in scooters, ICE has been having a dominating share of 96% and EVs at only 4%. Whereas if I look at scooters more than 1 lakh rupees price point, EVs have a dominant share over there, which is 77%, and your ICE scooters are at 23%. So what government is doing at this moment, government wants to promote EVs within the country. That's why what they have done is they have reduced the taxes on EVs. Now, if you see India, EVs are taxed at only 5%, which is more or less in line with the other ASEAN countries. Now, if you compare it with the ICE, it is almost 6 to 8x higher than EVs. Apart from this taxation benefit, government is also providing a subsidy of 10,000 for an electric two-wheeler, and for the three-wheeler, depending on the battery size, it goes up to 25 to 50,000 per vehicle. Now, there are certain cities wherein the penetration is much higher, and certain cities where the penetration is lower. Key drivers for higher penetration could be uninterrupted power supply within that particular city, better charging infra, and higher per capita income. So, Kochi, Bangalore, and Surat are some of the leading cities within the entire India. So, why to choose EV? So, of course, there are tax benefits that we discussed, but as a consumer, you also save 55% over a period of 10 years
if you choose an EV over ICE. So at the time of down payment or the first purchase price, your cost is somewhat 6% higher. But overall, you save a big chunk at fuel, which is almost you save 89% over a period of 10 years. And also the insurance and other maintenance is also very low in an EV. So we have done a peer comparison between Ola Electric as well as we have done a peer comparison with the listed companies who have a significant presence in EV. We have not considered the unlisted player. So on this key parameters, I'd like to highlight that. So the darker circle is almost 5. We have given higher the better, and the lower circle is almost definitely he has not done great or he is not having the ability. So if you look at the battery range, of course, Ola is giving the highest battery range at the moment on the respective EVs compared to other peers. Fast charging, of course, Hero, Ola, and TVS somewhere neck to neck. If we look at the distribution network, Bajaj has the widest distribution network. And in terms of market leadership, definitely what we saw is Ola is the market leader. Now, as on date, Ola has the highest launches announced at the moment, which is 4. Now, I personally have driven all the 5 vehicles, and based on the test drive experience, I found that Ola has better ease of driving, style and performance also better as compared to others, and pricing is also very lucrative. In terms of financial parameters, of course, business and volumes are growing for Ola very well, but TVS and Bajaj is also picking up with in line with Ola based on YOY basis. If we look about the return ratios, then definitely Bajaj and TVS are outpacing the Ola, wherein Ola is still into losses. So based on all these parameters, the final rating comes to is that Ola is beating the other players, and the second best player we consider is TVS. So let's now deep dive into the company. So this company is fairly new. Within just a 3 years time span, the company has done great and achieved market leadership. So in a record breaking time of 8 months, the plant was commissioned within October 21. In December 21, the S1 Pro delivery, the first scooter was delivered. And then in September 22, they established their R&D center in Bangalore, which is their BIC, which is Battery Innovation Center. In June 23, they started constructing their Gigafactory for vertical integration. And Feb 24, they have launched S1X, which is the newer models for the S1X, which was launched in December. If you look at product portfolio, currently there are 3 scooters on ground, which is Ola S1 Pro S1 and S1X. Now, S1 Pro makes up most of the volumes for Ola because it is the first scooter that they had launched and it is the most premium scooter and has all the best in class features at the moment. Now, this is something very exciting for the future. So, Ola has given this 4 products that they will be launching soon and they would hit markets in one by one. Now, the Ola business model is based on 3 key pillar strategy. The first pillar is R&D and technology. So what Ola has done is it has designed and developed in-house products such as batteries, software, electronics, which we'll discuss in the coming slide. The second key pillar for them is the EV hub. So Ola has created a future factory, which currently has a capacity of 1 million and can be scaled up to 10 million. So of course, he'll have a better operational efficiency going on as and when volumes are ramping up. Third strategy is very different, which is not proven in the Indian market, which is the go-to-market D2C omni-channel distribution network. So being Ola brand itself is a very popular brand in India, the ride-hailing app. Through the ride-hailing app as well as the online model, they are selling their electric vehicles at the moment, which is not proven in India, but it has worked for Ola. Now, key components within an EV, there are 2 to 3 key components. One is your battery, which is the heart of an electric vehicle, right? So Ola is planning to manufacture the battery cells itself in-house. Currently, the battery pack is manufactured in-house, but the cells are imported, which is the import content for this cells is almost 35 to 40%. But now, with the vertical integration in the plan that they have with their Gigafactory, definitely they are trying to insource that too. The MCU, which is the motor control unit, is also manufactured in-house, and the vehicle control unit, which is the instrument cluster, that is also made in-house with the own technology. So if you have your own technology, definitely it acts as a very competitive advantage because you can continuously modify and innovate. Now let's see key strengths one by one, and we'll discuss this in detail in the coming slides. So the first key strength is own technology. So Ola has built its own Move OS software, wherein this entire software helps
it to connect from dashboard to a mobile app. Now, it mobile app also offers a lot of features. Some of the key features are that it will show you the battery levels of the vehicle. It will show whether there is any fault in vehicle. If while driving on the road, if you find any problem, definitely there is an support or assistance provided on the app itself, wherein you can get roadside assistance. So this all features are inbuilt within their app. This app is connected with the vehicle itself. You can get all the data of your vehicle. Even the vehicle can be locked and unlocked through a mobile app. So this is called an technology which is MoveOS, which Ola has built in-house. Then the second key strength is the in-house cell manufacturing. So currently, if you'll see, they are importing cells from China and Korea, which compromise almost 30 to 35% of bill of material, which is the manufacturing cost of an electric vehicle. Globally, very few OEMs have built their own cell manufacturing, and Tesla is one of that. And it is considered that whoever an OEM who builds its own cells definitely have a very great competitive advantage. Now, Ola has invested more than 1,000 crores on R&D, and of course, there is a good earmark portion from the proceeds of IPO. And management has also guided that they'll continue to invest in R&D close to high single digit of the top line. And if we see globally also, the current cell manufacturers are making almost 30% GP margins. So what is the key part over here is that once the cell manufacturing starts, definitely it can be a product which has higher GP margins as compared to the electric vehicle. So how the cell manufacturing would be, the plant and the capacity would be ramped up in the coming years. So currently the operational capacity is 1.4 gigawatts. By Feb 25, the management has a target to complete it by take it up to 5 gigawatts. In phase two, that is by April 25, they'll take it up to 6.4. And beyond that, the plans are up to go up to 20 gigawatts. Now the company has received PLI scheme for up to 20 gigawatts. And once the plant is operational, they'll start accruing the incentives from the government. The third key strength is the D2C model that the Ola is operating. So we have tried to compare it with the other listed listed OEMs, be it new age as well as the existing old age OEMs. Now, if we see, Hero has the highest showroom count in India, which is 7,700, followed by TVS at 6,800. Now, if we look at the neck to neck peers, which are completely into electric, which is Ather and Ampere, still they are having very lower number of showrooms as compared to Ola. So Ola is operating through D2C model, which is an online model, which we discussed. But they understand that this business is something different, and customers would like to go and have an experience of the vehicle. They would like to have a test drive before buying. That's why they've opened experience center. And as on F24, March 24, they have 870 experience centers, pan India basis. The fourth key strength is the regulatory tailwinds. Now, Ola Electric is the only OEM who enjoys two PLI schemes. One is for the auto sector. The S1 Pro and S1 Air has been qualified. The other two products are under pipeline. And as per the management, they're expecting the approval for the same. The second PLI scheme that they have is for the lithium ion cell. So once the plant would be commissioned early next year, definitely they'll start receiving the incentives over there. Third is the EMPS, which was earlier known as FAME. So if a customer buys an electric vehicle, definitely there's a subsidy 10,000 per vehicle, which goes to the company itself directly, and the customer has to pay a lower price. So definitely this is a tailwind for EV sector itself. Apart from that, the company is also receiving some state government subsidies from the Tamil Nadu government, where they have based out their factories. So of course that is something again edge to the profitability going ahead. And apart from that, since it's a new company, they have to pay a very low corporate tax of 15%. Now, those were the key strengths. Let's discuss what could be the long-term growth drivers from next 3 to 5 years. Now, since Ola is building up a very huge capacity in cells, right? So if we look at the management commentary, almost 5 gigawatt of capacity can fulfill demand of 2 million vehicles. So definitely they have plans to go up to 20 gigawatt. So definitely there would be some surplus capacity with the company would be left out, and they have full plans to operate at optimum utilization. And definitely they'll try to sell the surplus cells into the market. And definitely, as I discussed, almost at the moment the global players are earning 30% GP margin. Then there is a very big export opportunity as well as the domestic opportunity for Ola. Apart from that, of course, the EV capacity, the vehicle capacity, which is 1 million, they have an infra ready of 5 million. That is also expected to ramp up in next 2 to 3 years. And export itself is becoming a huge opportunity in EVs as well as ICE. We have seen that being four-wheeler domestic players or two-wheeler players like Bajaj TVS have started exporting their vehicles.
So definitely Ola can look at exports in next 2 to 3 years. So that can be the one of the growth driver for them. Apart from that, company has also mentioned that they might look at commercial three-wheelers. So at the moment, they're only into two-wheelers. The lines are completely fungible. And if they want to manufacture, they can manufacture. Of course, this will increase their TAM. Third, at the moment, they have almost close to 900 charging stations pan-India basis, and the company is looking to expand those charging infra network. Now, at the moment, it is completely free for Ola users. And in future, the company can decide it to monetize, and they can come out with a pay per subscription model wherein the customers, a Ola customer or a non-Ola customer, can charge their vehicle at a subsidized or a good rate, and they can come out with plans, or they can monetize the charging infra that they are investing. So we think this could be one of these are the three growth drivers which are in not in the near term but in the medium to long term, which can play out for Ola. So now let's look at some of the key risks. So first risk is the slowdown in the entire EV industry itself. So for last 2 3 years, of course, because of COVID, the penetration was not increased as per the government's expectation, right? And we saw a slowdown in the EV industry itself. And then in 23-24, the industry has started to show very good growth. So any slowdown in the industry definitely would impact players, and Ola being a market leader can get a impact at a larger scale. Apart from that, lesser accessibility of the bike. So as on date, there are a lot of scooters which have tried and tested and running on the market, but there is no player, even the incumbent as well as the new age OEM, who has tried to manufacture bikes and launch it. And we have not seen much success in bikes. So any lesser acceptability of those bikes can of course impact the future profitability as well as revenues. Apart from this, the competitive intensity is of course rising day by day. A lot of Indian domestic OEMs are looking to capitalize the EV opportunity. So any impact over price war can have an impact on top line as well as volumes. Third risk is the change in government policy. Of course, a lot of promotions and policies are offered by government at the moment to increase penetration. Any changes on these policies can impact the can slower the EV penetration. The fourth and the biggest risk that we also feel is that the company is still at a loss making. Despite 3 years of operation, the losses have not narrowed. The losses are stagnant for last 2 years. So any adverse effect of the volumes or price war or competition can lead to higher losses, or the losses would continue going ahead. The fifth risk is the attrition rate is very high at 44%. And the last trick, what we see is that the Gigafactory, as it is a new product itself, it's a very high margin product, right? So if they excel it, definitely your profitability will improve significantly. But if they are not able to ramp up the facility or not able to scale up the plant for their cell manufacturing, then definitely it can have a huge impact on the company. So this is a case study that we have done. So we have tried to compare two Chinese pure play electric two-wheeler OEMs. So if you can see since 2018, if we look at the profitability, right? So IMA on the left hand side, the PAT has grown at a CAGR of 34%, right? The PAT is in Hong Kong dollars, billion dollars. And if we look at the second company on the right hand side, Yardia, the PAT for Yardia has grown at a CAGR of 47%. Now, since listing, IMA's PAT has grown only 4x, whereas if you see Yardia's PAT has grown 6x. Now, let's look at the next slide. Now, this is the comparison for both electric vehicle companies, both OEMs, and we can see that the IMA's PAT growth was only 4x, and this could be one of the reasons that the share price has only increased 8%, whereas Yardia, since listing, the share price has given a return of 669%. So, of course, this can hint that profitability also matters for any EV OEM. So I had visited the plant a month back, and these are some of the key takeaways from the plant. So the plant is currently the future factory. If I look at the scooter plant, the electric vehicle plant, that is operating at 45% capacity. The current capacity is of 1 million scooters and can be easily scale up to 5 million because the infra is ready. They just need to put up extra lines, then the plant can run at 5 million capacity. Till date, they have spent 800 crores for the Gigafactory, and of course, from the IPO process of 5,500 crores, 1,200 crores is earmarked for the same. The Gigafactory will be ramped up in a phased manner. The 5 gigawatt capacity can fulfill 1.5 to 2 million, and any surplus capacity beyond 5 gigawatt definitely can be sold to other OEMs, be it domestic, or it can be also used to sell to exports. On cell
manufacturing. Of course, the plant once it starts commercial operation next year, early next year, then definitely the incentives would be accrued. In future, that there are adjacent land parcels available for the company. So if they want to expand it, definitely that's not an issue for them. With this, I'll hand it over back to Jaspreet. Thanks, Yash, for those insightful slides. So, friends, जो यश ने बताया और इन द प्रीवियस टू स्लाइड्स एंड ऑल्सो अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो पैसा बना है कि नहीं इस स्पेस में विच इज अराउंड द ईवी स्पेस. तो अगर आप देखेंगे जो टॉप 5 नेम्स हैं इस मार्केट में विच इज एक टेस्ला यूएस का, बाकी सारे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं. सो टेस्ला, despite the hype, has not made money in the last 1 year and not in the last 3 years. उससे पहले उन्होंने जरूर 13x रिटर्न्स दिए थे, 13x, यस, बट दैट वाज इन द प्रीवियस 2 years, राइट. पिछले 3 सालों में पैसे नहीं बने. BYD अगेन, जो अगेन बड़ी मैन्युफैक्चरर है चाइना का, उसने अगेन 3x 4x पैसे बनाए, बट अगेन इन द फर्स्ट 2 years, फर्स्ट इन द लास्ट 5 years में से पहले 2 साल है. लास्ट के 3 साल में कोई पैसे नहीं बने, इनफैक्ट -6% चल रहा है. जो बाकी के मैन्युफैक्चरर्स हैं लार्जली 2 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं ईवी में, अगेन चाइनीज नेम्स, ली ऑटो, आइमा, याडिया, अगेन लार्जली अगर आप देखेंगे तो पैसा नहीं बना. तो द ओवरऑल क्रक्स ऑफ दिस स्लाइड इज कि पैसा बना है बट बहुत सेलेक्टिवली बना है स्पेस में, ग्लोबली इन द ईवी स्पेस. एंड वो बना है 1 से 2 सालों में. ऐसा नहीं कि आपने लेके रख दिया एंड ये लॉन्ग टर्म कंपाउंडर एंड बाय इट, शेयर इट, फॉरगेट इट टाइप, वैसा कुछ नहीं है. ये बहुत टेक्नोलॉजी चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा इसमें है, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं. इसलिए इसमें 1 से 2 साल का व्यू जरूर लिया जा सकता है, बट 5 साल का डेफिनेटली मुश्किल है लेना. एंड ज्यादातर नामों ने इसमें पैसा बनाया नहीं है. एंड दैट इज व्हाट द समरी ऑफ दिस स्लाइड इज. इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो व्हाट वी सी इज अगेन, अब ओला इलेक्ट्रिक के फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं. स्टार्ट किया था इन्होंने ऑपरेशंस 3 साल पहले, कुछ 20,000 गाड़ियां बेची थी FY22 में, स्केल अप किया 1.5 लाख तक FY23 एंड 3.2 lakhs इन FY24. बिग स्केल अप, एंड वो मार्केट शेयर 35% पे पहुंच गए हैं. फर्स्ट क्वार्टर का जो नंबर है वो करीबन 41% मार्केट शेयर पे पहुंच गए हैं. नंबर 1 बाय फार, नंबर 2 जो है 16% पे टीवीएस, एंड बाकी सारे बजाज, एथर वो सब पीछे हैं उनके काफी. तो 41% मार्केट शेयर इन 1Q, एंड जो उनकी ग्रोथ है 1Q में वो भी कुछ हेल्दी 40-50% रही है ऑन अ ईयर ओवर ईयर बेसिस. नेट रेवेन्यू, ये नेट सेल्स जो उन्होंने किए 500 करोड़ का करीबन FY24 में, एंड एबिटा मार्जिन अभी भी लॉस है. उसका रीजन है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो अभी भी 12% है. एंड हम अभी देखेंगे कि इसमें क्या स्कोप है इंप्रूवमेंट का. बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट टू हाईलाइट कि ऑब्वियसली नेट लेवल पे लॉस जरूर है. तो अगर आप देखेंगे 158 करोड़ का लॉस है इनका, compared to these are all in crores, right? These are all in crores, I'm sorry. So 1584 crores loss है in FY24, and जो लास्ट ईयर था वो भी करीबन 1500 करोड़ का लॉस था. फ्रेंड्स, उसको रुपीस करोड़ में पड़िएगा जो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में है टॉप, एंड 5,000 करोड़ के रेवेन्यू पे भी इन्होंने 1500 करोड़ का लॉस किया है. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट इज की जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो -28 का +2% हुआ, एंड +2 का +13% हो गया है. यहां से कितना ऊपर जा सकता है अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. एंड जैसे जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा वैसे वैसे जो एबिटा मार्जिन डिक्लाइन है वो कम हो गया, अभी -25% पे है. कंपनी का दावा है, ऑब्वियसली इनडायरेक्टली उन्होंने हिंट किया कि फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो अच्छे आएंगे. तो आर गेस इज की जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और जो एबिटा मार्जिन है काफी इंप्रूवमेंट दिखा सकता है इन द फर्स्ट क्वार्टर. जो नतीजे लिस्टिंग के बाद होंगे, तो आई थिंक इन अ मंथ फ्रॉम नाउ, वो सम टाइम इन द मंथ ऑफ एंड ऑफ अगस्त से पहले वो जब फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तो उसमें आप काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा. तो कितना एज ए सेड कितना कितना मार्जिन इंप्रूव हो सकता है. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 12.6 है, बट लेट्स लुक एट एबिटा मार्जिन -25% है. बाकी लोग कितना बना रहे हैं तो वो ये है, टेस्ला 14% बना रहा है, एंड BYD 5% एंड 6%. तो ले दे के ऐसा कहा जा सकता है कि 5 से 15% की रेंज में जा सकता है एबिटा मार्जिन. 5 से 15% एबिटा मार्जिन का मतलब है कि -25 से अगर वो +10% भी जाता है तो इट्स अ बिग स्विंग. और वो कैसे आएगा? दो रीजन
आ सकता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंशन। वो भी दो कारण से आ सकता है। एक है चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, बाइक्स में अगर अच्छा मार्जिन आ जाता है, या और हाई इंटेंसिटी हाई हाई वैल्यू बाइक्स अगर ये स्कूटर्स लॉन्च करते हैं तो आ सकता है। या फिर जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं, जो यश ने बताया इन टर्म्स ऑफ सेल मैन्युफैक्चरिंग, उधर अगर इनका जरूर कॉस्ट सेविंग्स होंगी, क्योंकि वो यश ने बताया 30% ग्रॉस मार्जिन पे वो लोग एंटिटीज ऑपरेट करते हैं ग्लोबली। तो कॉस्ट सेविंग से मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रोडक्ट मिक्स चेंज से एक्सपेंशन हो सकता है। सेकेंड इज द बिग ऑपरेटिंग लेवरेज। सो अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज का गेम देखेंगे तो 373 करोड़ से ये 2600 करोड़ पे पहुंचा, और वहां से 5000 करोड़, एंड यहां से भी डबल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए इन द नेक्स्ट 2 years. So even if it expands by 40-50% each year, in case it does, we are not saying it will definitely will, the the operating leverage will kick in, and because of that also margin expansion बड़ा दिख सकता है। -25% वाला इट कुड कम इनटू द पॉजिटिव जोन। अब पॉजिटिव कितना रहता है, +1% होता है कि +5 की +10%, ब्रॉडली वही रेंज है। दैट ऑब्वियसली टाइम विल टेल, बट आई थिंक वो आने में भी अभी 2 से 3 साल है। अर्लीस्ट इज FY 26 एंड मे बी इट कम्स इन FY 27, बट ब्रॉडली हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद का गेम क्या है वो वक्त ही बताएगा, क्योंकि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। वो भी हम बात करेंगे अभी आगे। नेटवर्थ 2000 करोड़ है, डेट ज्यादा है, बट डेट पे ऑफ भी कर रहे हैं अपने आईपीओ प्रोसीड से। R&D एक्सपेंस में काफी एक्सपेंस आउट करते हैं, एंड बट डेट इक्विटी इनकी काफी कम हो जाएगी पोस्ट पोस्ट दी आईपीओ, बिकॉज सीधा सीधा 5,500 करोड़ का तो नेटवर्थ ऐड हो जाएगा, तो 7,500 करोड़ आपकी नेटवर्थ बन जाएगी, 2,000 प्लस 5,500। एंड डेट अगर ये 800 करोड़ से भी कम करते हैं तो 1,500 करोड़ की डेट और 7,000 7,500 करोड़ का नेटवर्थ, तो हार्डली डेट इक्विटी बहुत कम रह जाएगा, तो काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाएंगे ये लोग पोस्ट पोस्ट दी आईपीओ। ये है ग्लोबल कॉम्स, लास्ट के तीन तीन चार स्लाइड्स एंड वी रैप इट अप। ये हैं ग्लोबल कॉम्स, ग्लोबल एंड इंडियन कॉम्स। तो अगर आप देखेंगे तो इनका -25% FY 24 का डेटा है, ये -25% एबिटा मार्जिन था। जो इंडियन लिस्टेड कॉम्स हैं उनका जो मार्जिन है वो 10-15-20% के आसपास है, 26% तक भी जाता है आइशर का। ग्रीव्स कॉटन का 3% है जो इस स्पेस में भी मौजूद है। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो 5-10%, 15% के ही मार्जिन मिलते हैं इस बिजनेस में। टेस्ला का 14% है, एंड सिमिलरली ROE ROC भी अट्रैक्टिव है टेस्ला का, BYD का अगर आप देखेंगे। बट ले देखिए, बात वही है कि पॉजिटिव एबिटा मार्जिन कब आएगा, कैसे आएगा, इफ एट ऑल इट कम्स इन द फोरसिबल फ्यूचर। कंपैरिजन की बात करें ग्लोबली तो दिस इज दैट स्लाइड। F 24 पे ईवी सेल्स ही देख पाएंगे, क्योंकि ईवी एबिटा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पी और क्योंकि ये लॉस मेकिंग है अभी भी, एबिटा पे भी और EPS पे भी। तो अगर आप देखेंगे तो 6.7 टाइम्स ईवी सेल्स है ये, राइट। ईवी इज मार्केट कैप प्लस डेट, एंड ईवी सेल्स इज दैट ईवी डिवाइड बाय सेल्स। तो मार्केट कैप अगर 33,000 करोड़ है, उसके ऊपर से डेट आप ऐड कर दीजिए करीबन करीबन 1,500 करोड़। उसके बाद सेल्स इन्होंने जो भी लास्ट ईयर किया है करीबन 5,000 करोड़, डिवाइड करेंगे 6.7x बनता है। नाउ दैट इफ यू कंपेयर विद इंडियन OEMs, थोड़ा सा महंगा जरूर लगेगा, क्योंकि बजाज से महंगा है, हीरो से महंगा है, TVS से महंगा है। एंड ईवी मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली देखेंगे तो टेस्ला 7.1 है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसकी टक्कर कर रहा है। एंड BYD ली ऑटो तो काफी कम उस पर चल रहे हैं। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री की इधर क्या वैल्यूएशन है, एकदम फिक्स नहीं रहेगा कि BYD ली ऑटो इतना कम है तो ये इसको भी उतना आना चाहिए। मोर इंपॉर्टेंटली FY 25 के बेसिस पे देखेंगे तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि अभी वो जो 6.7 था वो 4.3 बन गया है, क्योंकि उनका जो फर्स्ट क्वार्टर का जो नंबर है वो करीबन उन्होंने 45% ग्रोथ दिखाई है वॉल्यूम्स में ऑन अ वाई बेसिस। तो अगर हम वही फुल ईयर के लिए एक्स्ट्रापोलेट करें और अज्यूम करें कि वही रेवेन्यू ग्रोथ बनती है, तो ये 4.3 आ जाएगा ईवी सेल्स, विच बिकम स्लाइटली मोर अट्रैक्टिव नाउ व्हेन यू कंपेयर इट विद आइशर एंड बजाज एंड द एवरेज। तो ले देखिए, ग्रोथ का ही पूरा खेल है। ग्रोथ अगर 40-50% ईयर ओवर ईयर आती रहेगी तो इसमें इंटरेस्ट बना रहेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल रहेगी अगर ग्रोथ कभी भी स्लिप होती है तो ये लास्ट की 2-3 स्लाइड्स हैं, उसमें हमने बताने की कोशिश की है कि दो दो एग्जांपल्स हमने लिए हैं, एक जोमेटो और एक पेटीएम। तो जोमेटो जब लिस्ट हुआ था उसका इशू प्राइस था 76 रुपीज। अगेन ये कंपैरिजन इस मामले में है कि लॉस टू प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज का एग्जांपल ले रहे हैं। एक एंटिटी थी जिसने करके दिखाया, और एक एंटिटी है जो अभी तक नहीं कर पाई है। तो जोमेटो वो है जिसने कर दिया है। तो
जब ये आईपीओ आया था 76 रुपीज आईपीओ प्राइस, लिस्टिंग प्राइस 115। उस समय कंपनी का क्वार्टरली जो लॉस था वो 350 करोड़ था, 350 करोड़ क्वार्टरली लॉस। ये बॉटम में आप देखेंगे, राइट। धीरे धीरे 3 4 5 क्वार्टर्स निकलते गए, 350 करोड़ रिमेन 350 करोड़ प्रॉफिट, राइट। अगर आप देखें तो ये जो बीच का नंबर है 347 करोड़, अक्टूबर 22 जनवरी के बीच में वो मेंटेन रहा। तो शेयर प्राइस ऑब्वियसली मार्केट में गिरावट आई, प्लेटफॉर्म कंपनीज, टेक कंपनीज को लेके काफी सवाल उठ रहे थे, तो प्राइस टैंक्ड फ्रॉम 126 टू 51 रुपीज। बट एज एंड व्हेन अगर आप देखें तो मार्केट, बोलते हैं मार्केट इज अ स्लेव टू अर्निंग्स। तो जैसे जैसे ये लॉस मेकिंग सिचुएशन प्रॉफिट में बदलती गई, पहले +2, 36, 138, 175, और 2 दिन पहले जो नतीजे आए हैं उसमें अगर आप देखेंगे कि जो अभी इसका जो प्रॉफिट है वो वेल इन एक्सेस ऑफ 200 करोड़ पहुंच गया। तो वैसे ही अगर आप देखें तो जो शेयर प्राइस है वो 50 का बढ़ के टू, अभी आज का प्राइस तो और भी ज्यादा है, 250 प्लस हो गया है। तो नेट नेट ऑलमोस्ट 5x हो गया अपने बॉटम से, सिंपली बिकॉज वो लॉस से प्रॉफिट में आ गया है, राइट। तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ओला इलेक्ट्रिक लॉस से प्रॉफिट में आ सकती है? अगेन दैट्स अ क्वेश्चन यू हैव टू आंसर, you will have to ask yourselves. Obviously we may have our own this thing judgment and views. Our senses that there is a high probability that it should come to profits, but क्या वो सस्टेन करेगा और क्या वहां से और ग्रो करेगा प्रॉफिटेबिलिटी, वही एक सवाल है जिसका आंसर आज देना शायद मुश्किल है। मे बी आफ्टर अ ईयर उसका आंसर दे सकते हैं, जब उनके उनके 4 क्वार्टर्स के प्रॉफिट आ जाएंगे, उनकी उनकी जो गीगा फैक्ट्री है वो चालू हो जाएगी, उनके जो जो रेवेन्यू है वो यहाँ से 40-50% हायर हो जाएंगे, और अगले 40-50% की विजिबिलिटी मिल सकेगी। कंपेटिटिव इंटेंसिटी कितना स्केल अप हो रहा है वो पता चल जाएगा, और गवर्नमेंट के जितने पीएलआई बेनिफिट्स हैं और एंड रेगुलेटरी लैंडस्केप में क्या क्या चल रहा है वो उस पर काफी क्लैरिटी आएगी। तो एक साल बाद और ज्यादा उस पर क्लैरिटी रहेगी। ये दूसरा एग्जाम्पल है पेटीएम, 2000 प्लस पे इशू प्राइस आया था, बट इसका अगर आप देखें तो 800 करोड़ का क्वार्टरली लॉस है, वो घट के इट इट वेंट डाउन टू 165 करोड़। बट बीच में इतने इश्यूज आ गए, रेगुलेटरी एंड कंपनी इन्फ्लिक्टेड देमसेल्स, कि वो लॉस बढ़ बढ़ के वापस 800 करोड़ पे आ गया। तो अगर आप शेयर का प्राइस भी देखें तो वो उस हिसाब से 1300 रुपए का 500 पे आया, और वो 400, और अभी भी आज के दिन में भी 500 के नीचे चल रहा है। तो ये अगेन दो एग्जांपल हमने लिए, जोमेटो एंड पेटीएम। एक है जिसने लॉस से प्रॉफिट किया और मेंटेन कर रहा है प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट, एंड दूसरा है पेटीएम जो क्वार्टरली लॉस कर रहा था 800 करोड़, बट आज भी लेस, कम होने के बावजूद आज वापस 800 करोड़ क्वार्टरली लॉस पे। इसलिए शेयर प्राइस इज लेस देन, इज ऑलमोस्ट लाइक 1/4 ऑफ उनका जो इशू प्राइस था या लिस्टिंग प्राइस के आसपास जो था। तो टू समराइज, दिस इज दैट स्लाइड जहां पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगेन कंपैरिजन ऑफ टू लिस्टेड प्लेयर्स, लॉस टू प्रॉफिट कंपेयर्ड विद दिस ओला इलेक्ट्रिक। तो गवर्नमेंट सपोर्ट पेटीएम में नहीं था, बिल्कुल भी, उल्टा एक नेगेटिव था उसमें, तो इसलिए उसको हमने रेड रखा है। जोमेटो में न्यूट्रल है, ओला के केस में इट कुड बी, इट इज लुकिंग पॉजिटिव, क्योंकि हर तरीके का सपोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पीएलआई सपोर्ट ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ ओला के लिए ना, ओवरऑल इंडस्ट्री ईवी इकोसिस्टम के लिए। कंपेरेटिव इंटेंसिटी पेटीएम में बहुत ज्यादा थी, जोमेटो में ऑब्वियसली फेवरेबल थी, क्योंकि वो दो ही प्लेयर्स हैं, जोमेटो स्विगी लार्जली। ओला केस में ऑब्वियसली कंपेरेटिव इंटेंसिटी ज्यादा है। देन कस्टमर स्टिकीनेस न्यूट्रल कहेंगे ओला केस में, जो कि जोमेटो के केस में काफी ज्यादा है। टेक लैंडस्केप, टेक्नोलॉजी कितना यूज कर रहे हैं ओला, ऑब्वियसली रीजनेबल यूज कर रही है, बट दैट इज द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। उसमें ऑब्वियसली जो आएगा उसको टेक्नोलॉजी में बहुत स्पेंड करना पड़ेगा। अगेन जो सक्सेसफुल एग्जांपल जोमेटो है, उसने ऑब्वियसली टेक प्लेटफॉर्म बहुत ही रोबस्ट बनाया है। कैपिटल इंटेंसिटी अगेन जोमेटो को बिल्कुल नहीं लगा है, मतलब काफी कम लगा है। जो भी है उनका केपेक्स इंटेंसिव बिजनेस नहीं है, बट ओला इलेक्ट्रिक के केस में इट्स अ वेरी केपेक्स इंटेंसिव बिजनेस। एंड आप देखेंगे तो उस केस में एक रेड बनता है। मार्केट लीडरशिप में दोनों ही, जोमेटो एंड ओला दोनों ही नंबर 1 है, एंड बाय फार एंड बाय ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि एक साल थे, बट वो कंटिन्यूसली ईयर आफ्टर ईयर मार्केट लीडरशिप मेंटेन की है। एंड लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जोमेटो ने पहले ब्लिंकिट में ब्रांच आउट किया, फिर अपना हाइपर प्योर में किया, फिर इस तरह कर करके उन्होंने जोमेटो गोल्ड के थ्रू, अपना डाइन आउट के थ्रू उस बिजनेस में बनाया, और वो अगेन डिस्ट्रिक्ट करके उन्होंने ऑफरिंग्स लॉन्च की है। तो कर करके वो एंटायर कस्टमर डेटाबेस को यूज करके इंडियन मार्केट में नई ऑफरिंग्स लेके आ रहे हैं,
अपने जूस अप करने के लिए उनका जो डेटाबेस है। सिमिलरली पेटीएम ने भी कोशिश की है, काफी कुछ कर भी रहा है अपने इकोसिस्टम में, क्रॉस सेलिंग जिसे बोलते हैं। एंड सेम अकॉर्डिंग टू अस ओला भी कर सकता है और कर भी रहा है बाय दो तरीके से। एक है एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी जो जस्ट बताया ऑफ ईवीज एंड दी सेल मैन्युफैक्चरिंग। वो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी चाइना प्लस वन के अंडर इंडिया को मिल सकती है, ओला अपने आप को बहुत फेवरेबली पोजिशन है उस स्पेस में। एंड सेकेंड इज इन टर्म्स ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम अराउंड ईवीज, जो अगेन उन्होंने अपनी फैक्ट्री में वहां पे बनाया है कि कल को किसी को भी ईवीज के अराउंड कोई भी पार्ट्स लेना है, कोई भी अपनी ईवी की बाइक बनानी है, फोर व्हीलर्स बनाने हैं, तो वो पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस एरियाज में, SEZ अगर वो बोल रहे हैं, तो उसमें उस पूरे इकोसिस्टम को वो काफी फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोल सकते हैं, या काफी अच्छे से लैपअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेट नेट दैट इज अ ब्रॉडर क्विक समराइज्ड वर्जन ऑफ। तो इससे हमने बस आपको कंपैरिजन करके बताने की कोशिश की है कि अगर जोमेटो को अगर सक्सेसफुल केस स्टडी माना जाए, पेटीएम को फेलियर केस स्टडी माना जाए, बिकॉज दैट इज व्हाट द मार्केट इज टेलिंग अस, नॉट दैट वी हैव कंक्लूडेड दैट। तो आई वुड से ओला इज समवेयर इन बिटवीन। तो ऐसा नहीं है कि सारे सारे ग्रीन्स हैं, बट देयर इज अ मिक्स ऑफ ग्रीन्स एंड रेड्स एंड येलोस। तो उस हिसाब से आप उसको उसको यू कैन टेक दैट। बाकी आप अपना फाइनल डिसीजन यू कैन so to conclude, I think people who have high risk appetite, right, and can take slightly view from a 1 to 2 year view, right, not immediately, not necessarily only from listing in listing में obviously 12-15 रुपए का GMP दिखा रहा है, इशू प्राइस के ऊपर 76 रुपए 76 के ऊपर, but more from a 1 to 2 year view, people who have people who have high risk appetite, high to very high risk appetite, can consider Ola Electric IPO. And we are not saying you should buy, you should subscribe this thing. All we are saying is they can consider, with high and very high risk appetite, they can consider exploring the Ola Electric investment opportunity. बाकी डिसीजन आपको लेना है, आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके लीजिएगा अपना उनके थ्रू। And with that, I would say thank you, and we'll just start with questions. I'll just request Naveen to put the last two questions. एक हम पूछ रहे हैं आपसे, सबसे बड़ा हर्डल क्या है ओला की स्टोरी में, ओला इलेक्ट्रिक की स्टोरी में सबसे बड़ा हर्डल आपको क्या लगता है? चार ऑप्शंस आएंगे आपकी स्क्रीन पे, एंड उसके बाद हम आगे फिर से आपसे पूछेंगे कि आपका व्यू क्या बना है अब सारी कहानी सुनने के बाद। व्हाट इज योर क्विक सेंस ऑन वेयर, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? या सो द फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी अड़चन, सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या हो सकता है ओला इलेक्ट्रिक? अगेन यू टू पिक वन, एंड इट्स ऑन योर स्क्रीन नाउ, आई गेस। या इट शुड बी ऑन योर स्क्रीन एनी टाइम नाउ। I'm just reading out the questions in the meantime. To happy to answer questions around this space. A lot of questions that have come. Yeah, is it there? No. Okay. In the meantime, let me just we are just feed out प्री आईपीओ। ओके, सारे कंपनीज प्री आईपीओ में नहीं आती हैं, सो या लॉट ऑफ अनलिस्टेड प्री आईपीओ में सारा लॉट ऑफ कंपनीज डोंट कम, एंड इवन इफ दे कम देन दी it is more of institution to institution selling and not as much to retail. So yeah, that would be the reason why it was not explored under pre-IPO. The recycle will be one obstacle. Amit Kumar is saying the recycle will be one obstacle for entire industry. Yes, I agree with you. Yeah, it would be the recycle space या बैटरी के अराउंड एंड द एंटायर इकोसिस्टम, कितना वापस रिसाइकिल होके वापस आता है और कितना वापस फ्रेश उसमें आता है। थैंक यू लॉट ऑफ पीपल who have expressed who said thank you for the detailed session. Let me just ask just to jump in and come on to this question. When do you think this company can become EBITDA positive? तो किस साल में आपको लगता है EBITDA पॉजिटिव हो सकती है नॉट नेसेसरली होगी ही। एंड उसके दो तीन ड्राइवर्स की, केस किसी ने मिस कर दिया हो मेरा बीच में, उसके दो तीन ड्राइवर्स क्या होंगे? Over to you, यश। Right. So thanks. Uh,
Right. So what could be the drivers? Let's understand the drivers. So one is, of course, what Jasprit mentioned. Okay, as and when they are ramping up the volumes, right, there would be a very good operational efficiency that will kick in. Apart from that, the second product that they're looking to launch, that is your cells, right? Once they start manufacturing cells in-house. So normally, as I explained, almost globally, these companies are making 30% GP margins. Now, if I talk about the cost of a battery, is almost roughly 35%. So if they start using their own cells itself, there is a fair chance that they can increase the current GP from 12%, 13% to almost 20 to 25% once they start using their own cells itself. Because 30% पे 30% of the cost पर 30%, roughly 10 से 12% का savings वहीं हो जाता है. So that can give a blip to your GP. And apart from that, once the cell facility is operational and they sell it outside, the export, be it other domestic OEMs, then definitely that's again a high margin product that can give a good jump to the profitability. So if a capacity of cell goes from 5 to 10 gigawatts by end of F26, right? And the plant is operating at almost optimum utilization, we see that beyond 26, it can hit EBITDA positive. This is what we feel. Great, yes, thanks for that. Yes, just to fill in that question on the screen in front of you, friends. सबसे बड़ा रिस्क क्या है ओला की स्टोरी को? लॉस से प्रॉफिट नहीं कर पाएगी, प्रॉफिट में नहीं आ पाएगी, इट विल कंटिन्यू टू मेक लॉसेस. इज दैट द नंबर वन रिस्क, और चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, और इंटेंस कंपटीशन, और फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी? क्योंकि इस स्पेस में काफी सेल के लार्जली सेल के अराउंड काफी टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही हैं, होती रहेंगी, and including in the मतलब बैटरी के अराउंड, and including in the cell manufacturing space. So lithium based है या कुछ और source based है. So there's a lot of activity happening there. So I think in another 5 seconds, and then we move to the last question, poll question, which is yeah, Naveen, thanks. You can just put the last question. Finally, आपका view क्या बन रहा है after listening to our side of the story? Broadly, अब व्यू क्या है आपका compared to when we started 45 minutes back? Are you still positive? Are you not? और अभी भी can't say के zone में है? So this is that last question, and we'll take up more questions, friends, and we'll wrap it up in the next 10 minutes. So the last yes, okay, yeah. Up view क्या है? Just the last question, friends. What's your final view on this? When I say this, I mean after listening to our deep analysis, including doing a plant visit, meeting the managements, listening to so many videos and interviews, going through the DRHP, going through the presentation, and talking to select fund managers. तो हमने जो हमारा निष्कर्ष था वो we have shared with you. आपका व्यू क्या बन रहा है फाइनली आफ्टर लिसनिंग टू पूरा जो हमने आपके साथ समराइज्ड वर्जन शेयर किया वो द प्रेजेंटेशन? वो क्या बन रहा है? जस्ट व्हाट्स योर व्यू ऑन द ओला आईपीओ? Is it positive? Is it negative? Or are we still saying can't say? किसी ने पूछा था एम्प्लॉय कैसे डिक्लेयर करते हैं, मतलब एम्प्लॉय कोटा में भरना है. तो ऑब्वियसली अगर आप एम्प्लॉय हैं एज ऑन अ सर्टेन डेट, तो आप उसे डीआरएसपी में जाके देख सकते हैं कि अगर आप एम्प्लॉय हैं एज ऑन अ सर्टेन डेट, तो you'll be eligible to fill under the employee quota. ऐसा नहीं है कि अब आप आज आप बोलें कि मुझे एम्प्लॉय कोटा भरना है तो मैं एम्प्लॉय बन जाता हूँ, मैं सीवी दूंगा और वो इंटरव्यू लेंगे और मुझे लेंगे, और तब तक वो लिस्ट होके उसके 2 क्वार्टर के रिजल्ट भी आ जाएंगे. तो ये बहुत लेट हो गया है. तो इसलिए इनकेस आपका क्वेश्चन वहां से था, तो शायद ट्रेन ट्रेन निकल चुकी है. अभी 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 कुछ नहीं हो सकता. अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, पिछले आई थिंक एक साल का होगा उनका, कि एज ऑन सेम डेट लास्ट ईयर, वो डीएचपी में आपको मिल जाएगा. एज ऑन सेम डे लास्ट ईयर अगर आप उनके एम्प्लॉय रोल्स में थे तो आप एम्प्लॉय कोटा में भर सकते हैं. दैट वाज अ क्वेश्चन. या वी कैन stop that. Yeah, I think there are about 50% people who are positive on the IPO as per the results which are just on your screen, and about negative में 33% and can't say 15%. That's, I think, is a fair mix. Vikas Gupta ji पूछ रहे, it's a loss making company, why IPO now? Even some of the investors making loss, why are they selling? It's a great question, Vikas, कि आज इस समय ही क्यों आईपीओ ला रहे हैं? अभी भी लॉस मेकिंग है और कुछ इन्वेस्टर्स ने तो पैसा का नुकसान किया है. तो बिकॉज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड लाइक 3-4 years back, or maybe 5 years back. One is they need money. Second, इंक्रीमेंटली कंपनी को पैसा चाहिए यहां से ग्रो करने के लिए. तो कंपनी कहां से पैसा ले सकती थी?
अगेन प्राइवेट इक्विटी में जा सकती थी, आईपीओ आ सकती थी. दे थॉट एंड बिटवीन देम एंड द बैंकर्स दे थॉट कि आईपीओ इज द बेस्ट मार्केट to go at this stage, and explore. Third, I would guess is ki the risk appetite is back in the market. 25,000 nifty, and budget over, elections over. uh, the largely the clouds are not much there. Probably they thought this is the best time to latch on and get 6,200 crores at this price. Again, शायद प्राइवेट इक्विटी आते हैं, इन्वेस्टर्स आते तो वो इस मे बी इस प्राइस पे नहीं देते, या देते तो उनके अपने कोवेनेंट्स होते. तो एंड मे बी दे ओला कैप्स तो काफी टाइम से, बट मे बी मिस्टर अग्रवाल वांटेड टू हैव वन पब्लिक एंटिटी काफी टाइम से, तो उनका ये भी एक अरमान होगा. So all these things put together, I would say, makes it this as the opportune time to as investment opportunity. And believe me, अगर ये दो बातें, एक तो उन्होंने आईपीओ साइज काफी कम कर दिया है, राइट, इंक्लूडिंग दी ओएफएस पार्ट. पहले ओएफएस जो था 3-4 हजार करोड़ का था, उन्होंने कम करके कुछ 600-700 करोड़ कर दिया है. सेकंड, पहले वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थी, $7 बिलियन की बात हो रही थी, अप टू 7 बिलियन, 6 to 7. अभी $4 बिलियन की बात हो रही है. तो शायद अगर और लेट आता, एक साल बाद आते, और अगर और अच्छे नंबर्स दिखाते, तो शायद वैल्यूएशन भी बढ़ जाती. तो मे बी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल, राइट. तो वो भी एक कारण, वो भी एक हो सकता है. What about sodium? Yeah, I'll hand it over to you, Yash. What about sodium ion battery? क्या 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 सोडियम आयन बैटरी एक ऑल्टरनेटिव बन के आ सकता है क्या? Yeah. So globally also there are very limited use cases for sodium ion battery. Lithium is having a good chunk or a good share versus sodium. And sodium I think सिर्फ टेस्ला ने ही implement किया था, try किया था. And they are doing it, but I don't see many European OEM shifting to sodium. Still people feel that lithium is better. Apart from that, I have visited the factory. So currently the factory is built in such a way that you can use lithium, sodium as well as NMC, which is nickel, manganese and cobalt. So for Ola point of view, that's not a big issue also. They can use any chemistry as they want and as the technology changes over there. ग्रेट, थैंक्स. अशोक चौधरी जी, आपने बहुत सही लिखा है. सो ही इज जस्ट शेयरिंग हिज व्यू, इज नेगेटिव. ही इज सेइंग कि कैपिटल इंटेंसिव बहुत है ये बिजनेस, एंड competitive intensity भी बहुत ज्यादा है, and these will be the biggest hurdles. So we agree with you, but as you said, only time will tell. हमने दो एग्जांपल्स देखा, एक जोमेटो, एक पेटीएम, दोनों में ही ये वाले रिस्क नहीं थे, उनमें अलग टाइप का रिस्क था. बट वक्त के बदलते ही पता चला कि क्या क्या कैसा माहौल है. तो मे बी यूर राइट, यू नेवर नो, राइट. मे बी आई वुड से वी शुड नॉट राइट ऑफ. So we are not like super excited about this story. At the same time, all we are saying is do not write it off as well. Watch out the next 2 quarters performance. Next 2 quarters में आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कंपनी का जो डायरेक्शन है वो क्या ले रहा है. मैनेजमेंट क्या क्या आउटलुक शेयर कर रहे हैं, कमेंट्री दे रही हैं, बिकॉज अब वो पब्लिक हो जाएंगे तो कॉन कॉल्स करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, राइट, एंड आगे के गाइडेंस शेयर करेंगे, राइट. टू सम एक्सटेंट, इफ नॉट, अभी जोमेटो ने भी करना शुरू कर दिया, पेटीएम, सब लोग करते हैं, तो उससे काफी क्लैरिटी मिलेगी. तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर जरूर वॉच आउट करिएगा, एंड देन टेक अ कॉल. डू नॉट राइट ऑफ द स्टोरी, एंड डू नॉट जस्ट कीप अ क्लोज टैप. यू नेवर नो, could be an interesting space or interesting opportunity. But yeah, so thanks a lot for everyone who liked the presentation and the deep dive that Yash and team have done, including doing some grounds up research, meeting the dealers, testing the bikes, and meeting the promoters and the plant visit. um, yeah, I'll just take one last question. I guess cost to change will go up with bikes and CNG. Bikes with CNG, yeah, Abhinav Sethi ji, we don't know, अभी बजाज आया है, right? Bikes with CNG, बजाज ही है, right? अब या बजाज का भी है. My early this thing tells me that people, बहुत ज्यादा excitement नहीं है उस बाइक को लेकर. But we don't know, right? EV adoption can be high, right? 30-40% तो हो जाना चाहिए, if not 50-60. तो 30-40% भी बहुत बड़ा नंबर होता है, और अगर 3 साल में, 4 साल में नहीं हुआ, 6 साल में हो गया, तो भी बहुत बड़ा नंबर है. तो so that's broadly the thing. So I'm just saying, I think that's largely
um, the questions. I think so. We're not launching. So this IPO, again, I'm summarizing. It's open today. It's closing early next week. 76 rupees IPO price. 33,000 market cap. 6.7 times EV sales. The other OEMs, Indian OEMs, are about between 3, 4, 5, 6, 7 times. The global ones are at 7 times Tesla, and the Chinese ones are at 1.5, 2 times. टू समराइज लॉस टू प्रॉफिट मेकिंग में जोमेटो ने सक्सेसफुली करके दिखाया, इसलिए आज शेयर प्राइस 2x, 3x, 4x है इन द लास्ट 2 years, while पेटीएम इज 1/4, 2,500 का भाव आज 500 रुपए है, बिकॉज इट कंटिन्यू टू मेक लॉसेस. तो क्या ये कंपनी, क्या इसके स्ट्रेंथ्स बहुत सारे हैं. बैकवर्ड इंटीग्रेशन, लीडरशिप, द ईवी पेनिट्रेशन, स्केल अप फ्रॉम 5% to 40% or more. The PLI incentive, right? The first mover advantage, leadership, 41% market share, right? Promoters very, very dynamic and very aggressive, and he's obviously, this is not the first venture. The brand is established by now, Ola. The weakness में आप कह सकते हैं कि very high technology and constant change in technology, high, वो एक risk है. Change in the attrition rate बहुत high है कंपनी का. The PLI incentive, थोड़े चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हो, थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं. एंड जो इंडियन ओईएम्स हैं, उन्होंने अभी तक शायद अपना असली रंग नहीं दिखाया है. इफ दे वांट, दे कैन जस्ट क्रॉस सब्सिडाइज एंड थोड़ा प्राइसेस कम करके दे कैन गेट बैक सम मार्केट शेयर. बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं, जो अभी तक हुए नहीं है बाय नाउ. तो दीज आर, आई वुड से, सम ऑफ द वीकनेसेस. And obviously the last is, obviously it's still a loss making business. 500 crore के टॉप लाइन में कुछ 1500 crore का लॉस है. But as we saw, global majors, they do 5, 10, 15% EBITDA margin. ये भी -20%, -25% से +5, +10 कर सकती है अगले 3-4 सालों में. अगर उन्होंने कर लिया तो this could be a very, very rewarding investment. But if they're not able to do that, then obviously so keep a tab. This is only for a very high risk investor. Then only you should consider this opportunity. And final decision please अपने investment advisor से discuss करके, अपनी due diligence research करके ही लीजिएगा. The idea of this webinar was only to educate, empower, and share all the wisdom that we have gained over the last 3-4 weeks, including doing all those ground up research and going through the DRHP and the presentation. With that, I will close up today's session and say a big thank you to all the people who have turned up today. Do subscribe to the channel and share this video with all the people in your fraternity, so that it reaches a wider audience. And in case you've liked it, do press the like button. And a big thank you to Yash and his team for doing a commendable job on the detailed and exhaustive work on this. And this is by far the most detailed work that you'll get on social media. So do watch it out again in case you have missed it, watching it in the last 1 hour. With that, big thank you again, and happy weekend, and we look forward to meeting you again with another subject, sometime in the near future. Thank you and goodbye.